Hello, my dear student. This is Ranjit sir. Welcome to the Web Physics classes. Today, I am going to discuss about Kirchhoff's law. Kirchhoff's law in current electricity. This is actually class 12 CBSE, TBSE, and ICC board के लिए भी actually बोले ठीक है. Uh, so, what are the Kirchhoff's law? Kirchhoff's law. There are basically two law. First law is called current law. Kirchhoff's current law or junction rules बोलते हैं इसको. Junction rule or current law. So it states that sum of number of incoming current is equal to sum of number of outgoing current at the junction. Okay, कोई भी junction पर अगर current मतलब enter करेगा, suppose it is one junction in circuit, junction J, here current is entering I1, here also entering I2, it is outgoing current I3, this is outgoing current I4, outgoing current I5, it is entering current suppose I6. Okay, so now it is a junction. At any junction point, sum of incoming current I1 plus I2 plus I6 naki is equal to sum of outgoing current from the junction. So it will be I3 plus I4 plus I5. Okay, that means I1 plus I2 plus I6, these are actually entering towards the junction point. Okay, and then I3, I4 and I5, these are outgoing. Okay, leaving from the junction actually. Okay, leaving from the junction. Note it down. So now, so actually इधर जो करंट आता है, करंट का टोटल सम ऑफ इक्वल टू 0. In our whole universe, total charge is constant. Okay, that means total current will also be constant. That means अगर तुम इसको इधर लेके आओगे सब एक्सप्रेशन को, that means sum of all current is equal to 0. It means that ये constant भी है. ठीक है. So now second law. देखो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट्स क्या है. स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, लिखो. The sum of number of incoming current at the junction is equal to sum of number of outgoing current at the junction. Clear? So second law is called Kirchhoff's voltage law or loop rule बोलते हैं इसको. Loop rule or in short form it is called KVL. Kirchhoff's voltage law. First one it was Kirchhoff's current law. करंट के लिए एप्लीकेबल है. एक्चुअली जो ओहम्स लॉ है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. फॉर सॉल्विंग मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट यू नीड टू यूज Kirchhoff's law, first law, second law, and if there is more and more complicated circuit then we need to use Thevenin and Norton theorem. Actually in class 12 part these are not exist in your syllabus. तो Kirchhoff's law देखो. लूप रूल्स क्या बोला. The sum of total EMF in any branch or any loop in a circuit is equal to 0. That means sum of total EMF is equal to 0. EMF means we can say I into R is equal to also 0. That means total जो EMF or total potential related potential in this any loop is equal to sum up करके 0 होगा. ये statement. That means it states that the sum of total EMF in any closed loop equal to 0, which is related to its individual resistance as well as also cell. So now इसको किधर यूज करोगे तुम. Suppose we have one complete circuit where resistance and cell all are given. It is looking like a closed loop na, closed circuit. A, B, C, D,
suppose it is E and F. Now resistance, it is suppose R1, its resistance is sorry, not resistance, EMF is E1, it is E2, resistance is R2, resistance suppose R3, its EMF is okay. So now suppose we have given one complicated circuit, so it has mainly two loop naki, two loop A B C D is one loop, another loop is A B F E भी ले सकते हो तुम, और आउटर सर्किट में भी ले सकते हो, तीन लूप तुम इमेजिन कर सकते हो इधर। सो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए तुमको केबीएल यूज करना चाहिए, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको। तो एट एनी जंक्शन सपोज इधर से करंट I1 एंटर कर रहे हैं, इधर करंट I2, इधर करंट I3। नाउ सी वेरी केयरफुली, I1 is just entering where I2 and I3 is outgoing from the junction, okay? That means at the junction, any junction, इधर भी हो सकते हैं, we can use Kirchhoff's current law only, okay? So now, right, at junction A, I1 is equal to I2 plus I3 na, according to Kirchhoff's current law. Suppose it is equation number 1. So now, for solving this expression, that means suppose you will be given in your exam EMF R1 and R2 सब दे दिया, ठीक है। So now तुमको suppose I1, I2 and I3 कैलकुलेशन करने के लिए बोला, तुम क्या करोगे, 2 और 3 इक्वेशन बना लोगे, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट I1, I2, I3। क्लास 10 में जैसा करते हो x y z सॉल्व करो लाइक दिस। So now just going through this basis। सपोज इसका रोटेशन लिया एंटी क्लॉकवाइज, इसका रोटेशन लिया ये भी एंटी क्लॉकवाइज लो और क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको क्लॉकवाइज रोटेशन किया तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। इन लूप A B C D यूजिंग KBL, दैट मीन्स किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज जब करोगे इस लूप में, कैसे तुम सर्किट का इक्वेशन बनाओगे, देखो here current is in opposite to my direction ना कि I am going in this direction ना, A B C D A ना कि A B C D A कंप्लीट करो लूप को। सो नाउ जब तुम करंट का ऑपोजिट में जाओगे, याद रखना ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस का 2 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होगा मतलब देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बोला, सम ऑफ ऑल ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इन रिलेटेड रेजिस्टेंस विल बी 0, all are 0। सो नाउ I1 R1 then plus U1, then see if it is cell then towards the positive terminal of cell its sign will be positive, okay, that's why ये जो EMF है ये पॉजिटिव है। सो नाउ देखो तुम जब इधर रोटेट करते हुए इधर क्लोज करोगे तो करंट देखो ये वाला जो लूप है इधर करंट I2 लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ठीक है, D to C। तो यू आर गोइंग नाउ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक, करंट का अपोजिट में चल रहे हो, तो करंट का अपोजिट में जाओगे तो इसको साइन के हिसाब से पॉजिटिव ही लेना है, तो I2 R2 होगा, ठीक है। एंड देन इट इज ऑल्सो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2, तो इट विल बी E2 और है क्या, नहीं है, 0। दैट मीन्स टोटल सम ऑफ EMF इज इक्वल टू 0 था। हाँ, EMF क्या था, EMF इज इक्वल टू 0 है। इसको यूज करते हुए मतलब जो किर्चॉफ सेकंड लॉ है, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं इसको, टोटल EMF एंड रिलेटेड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस का ऑल द सम विल बिकम्स 0, ओके। सो नाउ वी हैव वन इक्वेशन। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, देखो इन लूप A B F, it was E and A using again KBL जब यूज करोगे
ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ दिस R1 विल बी पॉजिटिव ना कि I1 R1। देखो एक रूल्स लिख के देता हूँ सबके लिए। सपोज दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अंदर करंट का डायरेक्शन इधर है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ U, ओके। देन जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इसका, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल टू कितने IR ना, IR होता है, तो इट विल बी प्लस IR साइन के हिसाब से अगर चलोगे तो। सपोज करंट इज in this direction, U direction is also towards the current direction, okay, then potential difference will be minus IR, understood। रूल्स लिख के दे रहा हूँ। देखो रूल्स अगर तुमको पता नहीं होगा तो ये you will not able to do this one। so now ये रूल्स नंबर 1, ये रूल्स नंबर 2, तो रूल्स नंबर 3 इधर लिख के दे रहा हूँ। अभी देखो ये रेजिस्टेंस रिलेटेड था, अभी EMF रिलेशन देखो। सपोज तुमको चलते चलते एक EMF मिल गया, सेल मिल गया, तो तुम्हारा डायरेक्शन है टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, देन सेल का जो EMF होगा, EMF विल बी पॉजिटिव। U डायरेक्शन इज टूवर्ड्स प्लस टर्मिनल ऑफ द सेल, लॉन्ग इज प्लस, शॉर्ट इज माइनस ना कि। तो 4 1 will be, suppose U direction is towards negative terminal of the cell, then sign will be what, negative, understood। हाँ, इसको यूज किया इधर एक्चुअली। तो नाउ जस्ट इन दिस लूप जस्ट सी I1 R1 देखो ऑपोजिट, U डायरेक्शन इज, देखो तुमको ये लूप कंप्लीट करने के लिए A B F E A तक कंप्लीट करना है ना कि, तो इधर से जब जाओगे देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, U डायरेक्शन इज हियर, इट इज U, सो इट विल बी ऑब्वियसली इन दिस रूल ना कि, तो प्लस I1 R1 हो गया। then U direction is towards the positive terminal of the cell, so it will be plus U1, and then just इधर से आते आते किधर देखो इधर I3, U direction is also opposite direction of the I, मतलब I3, then it will be also plus I3 R3। so now U direction is also positive terminal of the cell, it is plus E, सपोज ये कितना लिया था, 3 लिया था ना कि, E3 इक्वल टू 0। एक्चुअली मिस्टेकनली इधर जो सब वैल्यू है ये सम अप करके प्लस आ गया, कभी कभी ये माइनस भी होते हैं। देखो माइनस में एक दिखा के देता हूँ, क्योंकि माइनस भी चाहिए। सपोज मेरा जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज नहीं दिया, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया है, एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, लोअर लूप में एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। देखो इन लूप, इसको और देख के लिखता हूँ, सेम टू सेम एक्सप्रेशन आएगा। देखो इन लूप A E F B A, now in this path, okay। so now so this path, so if we are using Kirchhoff's voltage law KVL, then what will happen, see now, see U direction is towards what, minus terminal of the cell, that means it will be E3, it will be E3, then U direction is towards the current direction, if it is along current direction then negative, very good, minus I3 R3। so now देखो U direction is along minus direction, minus U1, then U direction along current direction, it will be also minus, minus IR, हो गया ना। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, it will become same sentence, same equation, okay, not sentence। तो आपका माइनस क्यू ऐड किया, मतलब बोथ साइड, मतलब तुमको शो करने के लिए कि तुम ऐसा घूमो और ऐसा घूमो, इक्वेशन सेम आता है, ठीक है, इसलिए बोथ साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया, अंडरस्टूड, ओके। सो सपोज ये इक्वेशन 2, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 1 and 2 बाय नोइंग I इक्वल टू I1 प्लस I3 इनपुट करो, देन यू विल गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, सॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देके भी एप्लीकेशन कराऊंगा। तो रूल्स को लिख के रखना। नाउ किर्चॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन किधर है, एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूस्टन ब्रिज में, ठीक है। किर्चॉफ्स लॉ ह्यूस्टन ब्रिज में यूज होता है, इधर ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज
देखो ह्यूस्टन ब्रिज का 4 आर्म्स रहता है, 4 आर्म्स. सपोज वी हैव 4 arms on complicated circuit. It is Wheatstone bridge. If there is 4 or more than 4 arms, then we can say 99% sure that it will be Wheatstone bridge. So 1% क्यों नहीं बोला, क्योंकि Wheatstone bridge का एक प्रिंसिपल होता है वो मतलब सब सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. तो उधर तुमको किर्चॉफ्स लॉ यूज करना चाहिए. तो नाउ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स लॉ इज Wheatstone bridge प्रिंसिपल. ओके, सो इट इज ए ह्यूस्टन ब्रिज. देखो इट इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ फिजिक्स. देखने में कितना अच्छा लगता है सर्किट को, ठीक है. सो नाउ सपोज करंट बैटरी से करंट चल रहा है आई विल बी डिवाइड इनटू I1 प्लस I2 ना इनिशियली, I1 प्लस I2. देन देखो इधर एक जंक्शन मिला, जंक्शन से फिर से करंट सपोज इधर से चल गया IG मीन्स देखो G इज ए गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर देखते हो ना, इट कैन मेजर करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो. ओके, तो वेरी मच सेंसिटिव डिवाइस है, प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा. ऑलरेडी क्लास 11 का स्टूडेंट देख लिया. तो नाउ इधर से जो करंट जाएगा ये देखो, ये सपोज x मानो तुम, तो एट दिस जंक्शन यूजिंग KCL किर्चॉफ्स करंट लॉ जब यूज करोगे तुम, तो I1 इक्वल टू सम ऑफ IG प्लस x ना, तो x विल बिकम्स I1 माइनस IG. अंडरस्टूड. तो इधर से C2B जो ब्रांच है इधर करंट का कितने I1 माइनस IG ना. So now see very carefully. Now we have another junction ना कि इधर, तो इधर से देखो IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से ऑब्वियसली इधर जाएगा करंट इस लूप से. कितना होगा देखो, सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी आउटगोइंग करंट. हियर आल्सो I2 प्लस IG. तो दिस इज called Wheatstone bridge. So according to Wheatstone bridge principle, the ratio of 4 arms in a constituents resistance will be equal to each other. Okay, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का जो रेजिस्टेंस का रेशियो है ये एग्जैक्टली इक्वल टू द थर्ड एंड फोर्थ टर्म का रेजिस्टेंस का रेशियो. ओके, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू प्रूव R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 होगा, तो देन इट इज कॉल्ड Wheatstone bridge. ओके, ये पॉसिबल इफ गैल्वेनोमीटर डिप्लेशन विल बी नल. ओके, इसका प्रिंसिपल में क्या बोला, during null depletion of the galvanometer, the ratio of 4 arms in a Wheatstone bridge will be equal to each other. Okay, that means galvanometer का depletion नहीं देख रहे, that means no current is passes through the galvanometer now. Okay, under balance condition, obviously balance condition मतलब क्या है, no depletion. Okay, null depletion में IG equal to obviously 0 होगा. It is a main concept for proving this Wheatstone bridge. So now proof कैसे करोगे. See, it is also application of Kirchhoff's law. इधर Kirchhoff's law यूज करूंगा, KVL यूज करो. तो जंक्शन में तो KCL यूज कर लिया ऑलरेडी, ठीक है. KVL यूज करो. सपोज इधर रोटेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन पे, इधर रोटेशन दे रहा हूँ इस डायरेक्शन पे. ध्यान से देखो, तो देखे दे रहे वीडियो में, फोकस करो तो. लगाओ अच्छे से. This is one Wheatstone bridge. Current is entering at the junction A, then it will be divided into I1 and I2. Then at the C junction, again by using KCL or Kirchhoff's current law, we can get through this CB branch it will be I1 minus IG. And similarly, these processes are applicable at D junction, then it will be through this D2B it will be I2 plus IG. Okay, so during null depletion or balance condition of galvanometer, no current will be passes through this C to D. Okay, that means either IG equal to 0 है. So now by using KVL at A, C, D, A loop,
एंड अगेन वी विल यूज सी डी बी सी लूप के लिए भी केबीएल यूज करूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सी इन लूप A C B A by using KBL, see it is U direction, वो direction को यूज करना चाहिए, ठीक है। along U direction current is going, that means it will be minus ना कि I1 R1, then it will be what, 0 ना, 0, no need to put 0, then this one opposite to the direction of current is U direction, it will be minus ना कि माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस नहीं प्लस होगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन along the direction of current it will be minus, opposite to the direction of current it will be plus, plus I2 R3, understood? Equal to total sum of EMF equal to 0 ना, 0। तो इधर से आप कैलकुलेशन करोगे, ध्यान से देखो, I1 by I2 is equal to obviously R3 by R1 मिलेगा ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन इन लूप सी, देखो सी डी बी सी, सी डी बी सी, देखो सी टू डी, इधर तो आई जी 0 है तो 0, देन अलोंग दिस करंट इट विल बी माइनस ना कि I2 प्लस आई जी इंटू आर ना कि बी इक्वल टू आई आर ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, ओके। then it will be opposite to the direction, it will be plus, then it is I1 minus Ig into R2 equal to 0। now Ig क्या है, 0 ना, करंट तो 0 है, थ्रू द गैल्वेनोमीटर Ig 0 था, 0, इधर भी 0, then ultimate equation will be I2 into R4 plus I1 into R2 equal to 0, understood everyone? So now I1 by I2 equal to just make the equation, क्या होगा, R4 by R2 ना, साइड चेंज करो, देन I1 by I2 बनाओ, देन कंपेयर करो I1 by I2, इसको कैपिटल लिखा, ठीक है, स्मॉल बना दो, स्मॉल आई, नो प्रॉब्लम, स्मॉल आई बना दो। इसके इक्वेशन नंबर 2 दो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करो 1 एंड 2 को, then R3 by R1 equal to R4 by R2 ना कि, on comparing 1 and 2 we get what, R1 by 2 नहीं, R3 by R1 ना कि is equal to R4 by R2 ना कि, ये मिलेगा ना, I1 by I2, I1 by I2 equal to ये मिला, then I1 by I2 equal to R4 by R2 मिला, then this equal to this बोल सकते हो ना कंपेयर करते। so now implies that इसको अल्टरनेटिव करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो R1 by R2 equal to R3 by R4 आ जाता है ना कि, बस। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स लॉ। नाउ ह्यूस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन किधर है, बाय यूजिंग ह्यूस्टन ब्रिज वी कैन मेजर unknown resistance, okay, suppose the resistance of fourth arm is unknown, okay, जानता नहीं हूँ रेजिस्टेंस कितना है, suppose इधर 3 arms का रेजिस्टेंस दे दिया, if it is Wheatstone bridge then what will be the resistance of unknown, so now R4 is equal to C, if R4 is unknown, इरेज करता हूँ इस साइड, देखो if R4 equal to unknown resistance, then R4 is equal to R3 R2 by R1, okay, so by this way you can measure unknown resistance। so along with this one just we are going to solve one numerical, simple numerical, just see, हो रहे, अच्छा, तो ना एक्चुअली किर्चॉफ्स लॉ एंड ह्यूस्टन ब्रिज का यूजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको
तुम क्लास 12 में तो मिलता है, बट ग्रेजुएशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किर्चॉफ्स लॉ। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, जो भी करो कॉन्सेप्ट क्लियर करके करो, डोंट यूज योर आर्टिफिशियल नॉलेज। क्वेश्चन लिखो एवरीवन, लिखो इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट equivalent resistance, calculate the equivalent resistance. Suppose it is one circuit, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, and suppose this is 6 ohm, and this is suppose 8 ohm. A and B के बीच लगाया ये सब रेजिस्टेंस को। सपोज EMF और वोल्टेज दे दिया 10 वोल्ट, करंट भी चल रहा है इधर से। ये जो सर्किट दिया इसको कैसे सॉल्व करोगे? बाय यूजिंग ह्यूस्टन ब्रिज वी कैन सॉल्व दिस वन। पहले चेक करना पड़ेगा ये ह्यूस्टन ब्रिज हो गया। ह्यूस्टन ब्रिज होने के लिए क्या चाहिए है? 4 amps का जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो इक्वल होगा, तो देन इट विल बी ह्यूस्टन ब्रिज। If it is Wheatstone bridge, then obviously we are sure that no current is passing through this middle resistance. देखो 2 by 4 equal to 2, 3 by 6 equal to 2। ओके, इसको तुम R1 मानो, R1 इसको R2, ये R3, ये R4। सो R1 by R2 is equal to क्या है? 2 by 4, it is 1 by 2, and also R3 by R4 equal to 3 by 6, it is 1 by also 2। By this one we can say these two equations are matching with each other, that means it is Wheatstone bridge। Okay, if it is Wheatstone bridge, that is no current will be passing through 8 ohm resistance, इधर से कोई करंट नहीं चल रहा है, that means इसको तुम नेगलेक्ट कर सकते हो ये लूप को। अगर इधर से कोई करंट नहीं चलेगा, that means what, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। So what is the equivalent resistance in series? Very good। So it is 4 plus 8, sorry 4 plus 2 कितने? सपोज ये R 1 2 कर रहा हूँ ना, कि R1 2 का इक्विवेलेंट कितना है? डायरेक्ट एडिशन ना, 4 plus 2 equal to 6 ना कि, और इसका भी सेम है, R34 is equivalent of 3 ohm and 6 ohm। Now it will be 9 ohm ना कि, 9 ohm। Redrawing this circuit, ठीक है। Now we have 6 ohm and 9 ohm ना कि, देखो now between A and B 6 ohm and 9 ohm resistances are joining in parallel with each other। okay, पैरेलल होगा तो पैरेलल सिस्टम में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? R parallel equal to, if there is 2 resistance then it will be multiplication by addition of 2 resistance, easiest method। okay, याद रखना, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 into 9 divided by 6 plus 9 कितना है? 15 ओके, तो कितने का रिजल्ट? 3 is 9, 3 5 is 15, so 18 by 5, ये आया था रिजल्ट। वेरी गुड। अच्छा, तो इतना है इसका रेजिस्टेंस। कभी कभी और भी लेंथी कर देता है क्वेश्चन में। सपोज तुम्हें पोटेंशियल और ईएमएफ दे दिया, करंट निकाल लो, करंट आ जाएगा ना अभी। B इक्वल टू IR ओहम्स लो यूज करो, देन इट विल बी व्हाट, तो एक्सचेंज हो जाएगा। देखो निकल लो रिजल्ट। सपोज करंट निकलने का बोला तो B इक्वल टू I R इक्विवेलेंट और RP आ जाता है, तो इट विल बी B बाई RP ना कि, तो B इज गिवन 10 वोल्ट, RP इज गिवन 18 by 5, 5 ऊपर चला जाएगा, देन आ जाएगा। ठीक है, कितना एम्पियर लिख देना, इजी है। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा ठीक है, वीडियो क्लोज करो। थैंक यू।